RKEDU app. So let us start with our next topic, and that is cooperative movement in Maharashtra. जब मैं कहती हूँ कोऑपरेटिव, तो कोऑपरेटिव मतलब क्या कि एक साथ आके मिलजुल कर कोई काम करना, राइट? दैट इज कोऑपरेटिव और दैट इज कोऑपरेशन, राइट? When I talk about cooperative movement, it is the greatest contribution given by the state of Maharashtra to the country. Yes, it is counted as one of the most remarkable contribution that was given by Maharashtra to India. Cooperative movement is an effective instrument in the economic development, especially if we talk about rural areas. Because these cooperative movements have been helping and serving a lot of rural areas, and it has contributed to the overall development of certain rural areas, and also in improving the socio-economic conditions of the underprivileged in Maharashtra. See, like I already said, there has been a lot of regional imbalance. बहुत ज़्यादा बायस किया जाता है. अर्बन एरिया, सिटीज़ डेवलप होते जाते हैं, वहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिल जाती है. दिक्कत कहाँ पे आती है? तो उन रूरल एरियाज़ में जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल पाती, इसके लिए वो लोग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या सोशल डेवलपमेंट हो. ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का मेन एम था इन रूरल एरियाज़ को इकोनॉमिकली डेवलप करना और उन लोगों पे कंसंट्रेट करना जिनको ज़्यादातर ये अपॉर्चुनिटीज़, ये बेनिफिट्स नहीं मिलते, एंड दैट इज़ द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल इन महाराष्ट्र. The basic nature of cooperative societies is to encourage the values of self-help, democracy, equality and solidarity. जनरली कोऑपरेटिव मूवमेंट ने क्या कहा कि हम खुद की हेल्प कर सकते हैं. See, we cannot always be expecting that the government will help us or other community members might help us. It is always a better idea that we help ourselves. We help our community members, we help our family members, we help our area members and so on. So here we have been concentrating on values of self-help, democracy, equality and solidarity. That is, we are trying to develop all the areas equally without differentiating on the basis of caste, religion, areas, income levels, urban rural population and so on. सबको डेवलप करना है. हर एरिया, हर सेक्टर, हर कास्ट, हर रिलीजन, सबको डेवलप होने का मौका मिलना चाहिए, एंड वी शुड हैव दिस इक्वली. कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र was confined mainly to the field of agricultural credit. अब मेजॉरिटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ महाराष्ट्र में सेटअप हुई थी, नाउ सी लाइक वी सॉ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि इनको फाइनेंस असिस्टेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस दे कुड नॉट डेवलप देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर. अच्छे क्वालिटी सीड्स नहीं ले पाते थे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाते थे, गुड क्वालिटी फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं कर पाते थे, उनकी जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग थी बहुत ही कम थी, राइट? सो हमने क्या किया, मेजॉरिटी जो भी क्रेडिट सोसाइटीज़ यहाँ पे महाराष्ट्र में सेटअप हुई है, ज़्यादातर क्रेडिट सोसाइटी सेटअप हुई थी टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल क्रेडिट. मतलब इन फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, सो दैट ये भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है वो आसानी से डेवलप कर सके.
but slowly it extended to other areas such as agro processing, जो हम एग्रीकल्चरल गुड्स को लेकर उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ कर कर जो प्रोसेसिंग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैंगोज़ को लेकर जैम बनाते हैं, एप्पल्स को लेकर पल्प बनाते हैं, कॉटन को लेके कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, सिल्क को लेके सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, एंड सो ऑन. Agro marketing facilities such as transportation, warehousing, इन सबको सेटअप करना. Sugar cooperatives. These cooperatives were mainly set up for farmers who have been in the manufacturing of sugar, right? Fisheries cooperative societies, especially for the fishing community. Cooperative dairy societies to promote the dairy industry in Maharashtra. Textiles to promote the cloth manufacturing in Maharashtra. Housing societies so that we can provide a lot of people with affordable housing, because again, housing remains one of the basic necessities of humans. Consumer stores so that the consumer can get the goods at very reasonable prices and we do not exploit our consumers. As on 31st March 2017, there were a total of 1.95 lakh cooperative societies and a total of 5.25 lakh members were a part of these cooperative societies, right? So if you see, the cooperative societies have played a very important role in the rural development. Every industry that is concentrated in the rural areas, they have been setting up cooperative societies for every such sector so that all the sectors can develop, they can grow, and ultimately the rural areas can grow, right? तो याद रखिएगा, एक नहीं बहुत सारे सेक्टर्स में ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप होते गई और आज हमारे पास 31 मार्च 2017 के डेटा के हिसाब से 1.95 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑलरेडी है. That has been working towards all these sectors and for the development of rural areas. Cooperative societies has been a drastic step and has played a very important role in the development of Maharashtra as a state, especially if you talk about the rural areas. And that is why we say that this has been one of the major contributions of Maharashtra to our country. Here we have finished our chapter number 4. I hope you must have understood the chapter number 4 and why do we study the economy of Maharashtra? Why do we have to study the different sectors? What are the problems and what steps government has been taking to develop every sector and ultimately develop the state of Maharashtra? Remember, Maharashtra is our state and we have been living here, and therefore understanding our state is very important. Understanding the contribution of sectors, understanding the steps taken by the government remain very important. I hope you must have understood this chapter.